Good morning. Today we will look at first the biography of Percy Bysshe Shelley, a poet of mainly the Romantic age, a contemporary of John Keats and others like him. Shelley as a poet is prescribed for the students of BA Part 2. We have two of his poems prescribed. One is To a Skylark, and the other is Ode to the West Wind. Before we look at either of the poems, let us first examine the biography. Shelley was born in 1792 and he died in 1822. Known for his lyrical and long form verse, Percy Bysshe Shelley was a prominent English Romantic poet and was one of the most highly regarded and influential poets of the 19th century. Who was Percy Bysshe Shelley? Percy Bysshe Shelley is one of the epic poets of the 19th century and is best known for his classic anthology verse works such as Ode to the West Wind and The Mask of Anarchy. He is also well known for his long form poetry, including Queen Mab and Alistair. He went on many adventures with his second wife, Mary Shelley, who is also the author of Frankenstein. Early life. Percy Bysshe Shelley, a controversial English writer of great personal conviction, was born on August 4th, 1792. His parents were Timothy Shelley, a squire and member of parliament, and Elizabeth Pilfold. Shelley was sent to study at Eton College. Eton College is actually a very famous school for boys, where the elite people of the English society sent their sons to study. While there, he was severely bullied, both physical and mentally, by his classmates. Shelley retreated into his imagination. Within a year's time, he had published 2 novels and 2 volumes of poetry, including Saint Irwin and posthumous fragments of Margaret Nicholson. In the fall of 1810, fall means the season when trees shed their leaves, and this season comes sometime around the month of August in England. In the fall of 1810, Shelley entered University College, Oxford. It seemed a better academic environment for him than Eton, but after a few months was expelled for writing a pamphlet on atheism. And atheism means the belief that there is no God. हम जिसको हिंदी में नास्तिकवाद कहते हैं, यानी कि ये विश्वास करना कि ईश्वर नहीं है. In addition to long form poetry, यानी कि Shelley लंबी poems लिखते थे, कई stanzas लंबी. Shelley also began writing political pamphlets. In 2012, he met his hero and future mentor, the radical political philosopher William Godwin, author of Political Justice. In 1815, Shelley wrote Alistair, or The Spirit of Solitude, a 720-line poem now recognized as his first great work. After a trip through the French Alps एक माउंटेन रेंज है, पर्वतों की श्रृंखला है जो कि यूरोप के उत्तरी यूरोप में चलती है और कई देशों को कवर करती है, जैसे कि फ्रांस, इटली एट्सेट्रा. आफ्टर अ ट्रिप थ्रू द फ्रेंच एल्प्स विद बायरन भी एक बहुत फेमस इंग्लिश पोइट थे और उनका पूरा नाम था गॉर्डन लॉर्ड बायरन.
He was inspired to write Mont Blanc, a pondering over the relationship between man and nature. Pondering का मतलब है to think about something carefully for a long time. किसी विषय पर गंभीरता पूर्वक या देर तक सोचना. Shelley befriended John Keats and Leigh Hunt, both talented poets and writers. Shelley's conversations with them encouraged his own literary pursuits. Literary का मतलब है साहित्यिक, pursuits का मतलब है an activity that you do either for work or for pleasure. ऐसा काम जो आपको खुशी दे. In 1818, he wrote The Revolt of Islam. Though the title suggests the subject of Islam, the poem's focus is religion in general and features socialist political themes. यानी कि सामाजिक राजनैतिक themes पर ये उन्होंने अपना कृति लिखी है. Shortly after the publication of The Revolt of Islam, Shelley left for Italy, where Shelley wrote Prometheus Unbound. Death and Legacy. On July 8, 1822, just before turning 30, Shelley drowned while sailing his boat. यानी कि वो उनको डक हंटिंग का शौक़ था और वो किसी स्थान पर हंटिंग के लिए गए थे शायद, और तब उनकी जो बोट है वो डूब गई थी और उनका देहांत हो गया था. उनकी बायोग्राफी के बारे में बस इतना ही. आगे हम पोएम टू अ स्काईलार्क का अध्ययन करेंगे. पर्सी बेसी शेली या पी.बी. शेली के जीवनी के बारे में संक्षेप में पढ़ने के बाद अब हम उनकी पोएम टू अ स्काईलार्क को देखते हैं. First, I have given you the text of the poem. You can look at it. I will not read through it because that takes up unnecessary time. आप उसको डिटेल आप पोएम को पढ़ सकते हैं. पोएम के पश्चात टेक्स्ट के बाद कुछ वर्ड्स एंड द मीनिंग्स हैं जो पोएम में इस्तेमाल किए गए हैं. जैसे हेल, उसका मीनिंग दे रखा है ब्लिथ एट्सेट्रा. आप उसका भी अध्ययन आप कर लीजिएगा. हम अब आते हैं एक्चुअल पोएम की तरफ. इंट्रोडक्शन. द स्पीकर addressing a skylark. Now a skylark is a bird, okay? And किसी मौके पर शैली कहीं घूमने गए थे, उनको घूमने का बहुत शौक़ था और वहाँ पर उन्होंने स्काईलार्क को उड़ते हुए देखा और उससे वो प्रेरित हुए और उन्होंने ये पोएम लिखी. सो द स्पीकर अड्रेसिंग अ स्काईलार्क सेज दैट इट इज़ अ ब्लिथ स्पिरिट एंड ब्लिथ मीन्स ऑफ अ हैप्पी लाइट हार्टेड कैरेक्टर. यानी कि जिसको हम जिंदा दिल, मस्त आत्मा की तरह, स्पिरिट यानी कि आत्मा की तरह बिना किसी बंदिश के. इट इज़ अ ब्लिथ स्पिरिट दैन अ बर्ड, for its song comes from heaven, and from its full heart pours profuse strains of unpremeditated art. Profuse का मतलब है given or produced in great quantity, यानी कि अत्यधिक मात्रा में जो कोई चीज़ निकलती है. यहाँ पर बर्ड के गीत की बात हो रही है, यानी कि बर्ड जो सुरीली आवाज़ में गीत गा सुनाती है उसकी बात हो रही है. एंड ये जो वर्ड्स हैं प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, ये पोएम की लाइन्स हैं, इसलिए इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है. द स्काईलार्क फ्लाइज हायर एंड हायर लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर इन द ब्लू स्काई, सिंगिंग एज इट फ्लाइज इन द गोल्डन लाइटिंग ऑफ द सन. इट फ्लोट्स एंड रन्स लाइक एन अनबॉडीड जॉय. As the skylark flies higher and higher, the speaker loses sight of it. Means वो अदृश्य हो जाती है. जैसे जैसे आकाश में वो ऊपर उड़ रही है वो उन्हें दिखाई देना बंद हो जाती है.
but is still able to hear its shrill delight, which comes down as keenly meaning sharply, loud and clear, as moonbeams in the white dawn, which can be felt even when they are not seen. यानी कि आकाश में चिड़िया अब दिखाई नहीं दे रही है, बट उसकी आवाज़ जो इतनी बुलंद है, इतनी तेज़ है कि उनको नीचे धरती पर फिर भी सुनाई देती है. The earth and air ring with the skylark's voice, just as heaven overflows with moonbeams when the moon shines out from behind a lonely cloud. The speaker says that no one knows what the skylark is, for it is unique. Even rainbow clouds do not rain as brightly as the shower of melody that pours from the skylark. The bird is like a poet hidden in the light of thought, able to make the world experience sympathy with hopes and fears it heeded not. It is like a lonely maiden in a palace star. बिल्कुल एक अकेली यंग प्रिंसेस जिसको किसी महल की एक किसी मीनार में कोने में कैद कर दिया हो. बर्ड भी वैसी ही है. हु यूजेस हर सॉन्ग टू सूद हर लव लोन सोल. ये बिल्कुल जैसे कहानियाँ होती हैं, किस्से कहानियाँ होते हैं जिसमें एक राजकुमारी कहीं कैद है, वैसी ही एक वर्ड पिक्चर पोइट ने आपके लिए क्रिएट की है. It is like a golden glowworm scattering light among the flowers and grass in which it is hidden. Now glowworm जिसको हम जुगनू कहते हैं, रात में जो वो बेसिकली कीड़े होते हैं जो उड़ते समय रात में अपने उनके शरीर से एक रोशनी निकलती है हर थोड़ी थोड़ी देर में, वो इंग्लिश में glowworms कहलाते हैं. It is like a rose embowered in its own green leaves, whose scent is blown by the wind until the bees are faint with too much sweet. यानी कि बर्ड को प्रकृति के ही विभिन्न चीज़ों के साथ उसकी तुलना की है, कंपैरिजन किया है. हर जगह लाइक वर्ड यूज़ किया है. The skylark's song surpasses all that ever was, joyous and clear and fresh. Surpasses means goes beyond. In other words, is better than. Whether the rain falling on the twinkling grass, twinkling yani ki shining like stars, or the flowers the rain awakens. Calling the skylark sprite or bird, the speaker asks it to tell him its sweet thoughts, heard, for he has never heard anyone or anything call up a flood of rapture so divine. यानी कि बर्ड की तरह मधुर आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी. रैप्चर मतलब खुशी, इतनी खुशी कि जो समा ना पाए दिल में. एंड डिवाइन यानी कि बिलोंगिंग टू हेवन. Compared to the skylarks, any music would seem lacking. What objects, the speaker asks, are the fountains of thy happy strain? यानी कि what is the source जहाँ से आपकी ये खुशी भरी चहकती आवाज़ सुनाई दे रही है. Is it fields, waves, mountains, the sky, the plain, or love of thine own kind, or ignorance or pain? Pain and languor, the speaker says, never came near the skylark. It loves, but has never known love's sad satiety. यानी कि इंसानों के मन में, दिल में प्यार होता है, लेकिन इंसानी प्यार और जज्बों के साथ कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा भी होती है. जैसे जुदाई की पीड़ा, या अगर लव रिटर्न न किया जाए सामने वाले के द्वारा तो वो पीड़ा, रिजेक्शन की पीड़ा, हार्ट ब्रेक की पीड़ा. पर बर्ड का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जिस भी चीज़ से वो मोहब्बत करती है, वो इंसानों के प्यार की तरह नहीं है. उसको कभी दुख या गम नहीं होता. Of death, the skylark must know things more true and deep than mortals could dream. Otherwise, the speaker asks, how could thy notes flow in such a crystal stream? यानी कि अगर आपको
हमसे ज़्यादा, हम इंसानों से ज़्यादा डेथ के बारे में नहीं पता होता, तो आपकी जो आवाज़ है, आपके जो गीत के जो सुर हैं, वो इतने स्वच्छंदता के साथ, इतने प्योरिटी के साथ कैसे निकलते या बहते? For mortals, mortals means human beings, the experience of sadness is bound inextricably मतलब जिसको अलग ना किया जा सके, what that which cannot be separated with the experience of sadness. अब ये विडम्बना है, इंसानी जज्बातों में अगर खुशी है तो गम भी है, यानी हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं. Dwelling upon memories and hopes for the future, mortal men pine for what is not. Their laughter is fraught. Fraught का मतलब है filled with some pain. Their sweetest songs are those that tell of saddest thought. यानी कि इंसान अगर एक प्यार भरा गीत भी गाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें जुदाई का एहसास भी होगा और मोहब्बत के बिछड़ने का एहसास भी होगा. But the speaker says, even if men could scorn hate and pride and fear and were born without the capacity to weep, he still does not know how they could ever approximate the joy expressed the skylark. स्पीकर कहता है कि अगर इंसानों में ये सब भाव नहीं भी होते, मान लेते हैं, तो भी क्या ये संभव था कि स्पीकर यानी कि इंसान उस जॉय को इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते जितना कि स्काईलार्क कर पाती है. Calling the bird a scorner of the ground, he says that its music is better than all music and all poetry. He asks the bird to teach him half the gladness that thy brain must know, for then he would overflow with harmonious madness, and his song would be so beautiful that the world would listen to him, even as he is now listening to the skylark. वो स्काईलार्क से दुआ मांग रहे हैं कि मुझे भी वो सिखा दो जिस तरीके से तुम इतना मधुर गीत गाती हो. अगर मेरे को आधा भी इसका मेरे अंदर गुण आ जाए या प्रतिभा हो जाए मेरे अंदर, तो मैं एक अच्छा बेहतर इंसान बन सकूँगा. Summary of a skylark. To a Skylark is Shelley's romantic ode of a small songbird he believed embodied joy and happiness. The skylark's song surpasses all music. That is, it is better than any music he has ever heard. It is a divine expression, an ideal beyond the reach of humans, who know happiness only through sadness. If only the lark would teach the poet and reveal half the gladness that thy brain must know, then people might listen to the poet and be transformed. But can this ever be achieved? The poem is sparked by inspiration, fueled by aspiration, aspiration meaning hope for the future, and carries philosophical insight. First, for Shelley, the skylark is a divine entity, something more than flesh, blood, and feather. It is a symbol of spiritual upliftment and represents all that humans strive for. Strive for means try for, but can never attain. Attain means achieve. यानी कि इंसान जो इस बर्ड के पास स्वतः ही है, प्रकृति ने उसको दिया है, इंसान उसी चीज़ की कामना करता है, लेकिन शायद ही वो उसको कभी मिल पाएगा. एंड दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम द स्ट्रेसेस एंड पेन ऑफ मॉर्टल लाइफ. यानी कि इस इंसानी जीवन के जो कठिनाइयाँ हैं, का जो दर्द है, उससे इंसान छुटकारा पाना चाहता है. Throughout the 21 stanzas, the poet explores this realm of spirituality,
comparing the bird with numerous things: a cloud of fire, a star of heaven, a rose, and so on. The idea that the bird and its song transcend the limits of earthly existence. Transcend means go above. And that the bird has an inner knowledge potentially available to humanity is fundamental to the poem and creates a subtle tension. The poet's approach to the singing bird is fervently romantic. Fervently means passionately, with deep feeling. That is, Shelley took inspiration from the natural world, believing it to be an expression of the divine. In fact, he was inspired to write the poem after a country walk in Italy one evening with his second wife, Mary. This fits in neatly with Shelley's own view of what a poet is and what poetry can do to transform and uplift. And Shelley says, a poet is a nightingale who sits in darkness and seeks means tries to cheer his own solitude with sweet sounds. His auditors are as men entranced by the melody of an unseen musician, who feel they are moved and softened, yet know not whence or why. आपको बता दूं दैट 19th सेंचुरी के जो जितने भी पोइट्स थे, लगभग सब ने अपने अपने तरीके से पोइट्री की एक तरीके से डेफिनेशन दी है, जिस तरीके से अभी शैली ने भी पोइट्री की डेफिनेशन दी है, रादर पोइट का क्या काम है ये बताया है. To a Skylark explores the tension that exists between the perfected, unpremeditated art and the attempts by the poet to understand and capture. From the initial observation and perception, through the various comparisons and questions, the speaker finally concludes that humans are lacking and inadequate. यानी कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, हम पर्याप्त नहीं हैं. हमारी प्रतिभाएं, हमारी संभावनाएं, हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो योग्यताएं हैं, वो उनमें कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है ही. If only the bird would share its knowledge, if only humans could express this spiritual ideal. The speaker acknowledges that harmonious madness might be the outcome if such things were possible, an idea taken from Plato's Phaedrus, but at least society at large would be listening. Society at large means बड़े व्यापक तरीके से. The ending of this poem resonates with other endings of Shelley's odes. For example, in Hymn to Intellectual Beauty, the speaker asks that he may love all humankind. In Ode to the West Wind, he asks that my words among mankind may be scattered. And in To a Skylark, he asks that from my lips harmonious madness would flow. इस सेशन में इतना ही. हम अगले सेशन में पोएम का एनालिसिस देखेंगे. थैंक यू.